So now the first word today is the linear. Linear normally हम use करते हैं a linear the thing that goes in a line, जो एक line की सूरत में जाती है. I mean लकीर एक simple line पे जाती है. That is what known as a linear. And most probably this word is used for an equation. Linear equation for an example. इस तरह से ये use होता है. Number 2, legitimate, कानूनी. जो भी चीज कानून ने आपको अलाउ कर दी, हम कहते हैं इट इज लेजिटिमेट. 18 years ड्राइविंग इज लेजिटिमेट इन पाकिस्तान. सो 18 year प्लस ड्राइविंग जो है वो लेजिटिमेट है पाकिस्तान में. तो लेजिटिमेट मींस जो भी चीज कानूनी हो या कोई भी चीज जिसको हम कहते हैं इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, जायज है, दैट इज नोन एज लेजिटिमेट. नंबर 3 इज लेबर. लेबर का मतलब होता है मजदूरी. एक्चुअली लेबर मींस टू मेक एन एफर्ट. कोशिश करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है. द पर्सन मेड अ लॉट ऑफ लेबर टू बिकम सक्सेसफुल. बंदे ने बहुत मेहनत की है सक्सेसफुल होने के लिए. सो इसको उस तनाजुर में भी लिया जा सकता है अगर ब्लैंक्स के एग्जाम में आए. मैथमेटिक्स इट इज अ सब्जेक्ट इन योर करिकुलम, है ना, रियाजी कहते हैं उर्दू में. आगे चले जी. सो नाउ मिसलीड, मिसलीड, मिसलेड एंड मिसलीडिंग. अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा. मिसलीडिंग कोई भी ऐसी चीज जो आपको गलत तरफ ले जाए, गुमराह कर दे, दैट इज नोन एज मिसलीड. मिसलीड, मिसलेड. अब मिसलेड क्या है? मिसलेड जिसको गुमराह किया गया हो. मिसलीडिंग एंड मिसलेड. मिसलीडिंग इज समथिंग जो गुमराही की तरफ ले जाए. मिसलेड जो गुमराह हो गया हो. क्लियर जी? सो मिसलेड इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर गुमराह. मेरी बात में गुमराह हुआ means the person who is not on the right path. He is known as a misled person. है ना जी? information बड़ी misleading थी, गुमराह कौन थी, है ना? means the false information is known as a misleading information. उसका रिजल्ट क्या होगा? misled. okay, so now monument कहते हैं ऐसी जगह को जो आप बनाते हैं, the construction that you make in context of the memory of some old time. किसी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए. सो इसको नॉर्मली उर्दू में कन्वर्ट करें तो कहेंगे यादगार. मोनोमेंट मींस यादगार. इट इज मॉस्किटो, जो आजकल खासा इन है आपके मार्केट में. आजकल खासा इन है हॉस्पिटल्स में, डेंगू के पेशेंट्स पड़े, सब मॉस्किटो मच्छर, है ना. एवरीबॉडी नोज दैट. आगे चलेंगे जी. सो नाउ मैनिपुलेट. इट इज मैनिपुलेटर. मैनिपुलेशन से है. मैनिपुलेशन चीजों के अंदर रद्दो-बदल करना. मैनिपुलेशन चीजों के अंदर रद्दो-बदल कर दिया है. मैनिपुलेशन फैक्ट्स को ऑल्टर कर देना क्या कहलाएगा? मैनिपुलेशन. और इसको करने वाला क्या कहलाएगा? मैनिपुलेटर. द पर्सन हु इन फैक्ट मिसलीड्स द इंफॉर्मेशन, ही इज नोन एज द मैनिपुलेटर. हेरा फेरी करने वाला मैनिपुलेटर. हेरा फेरी क्या कहलाएगा? मैनिपुलेशन. आगे चले जी. मेटाबॉलिज्म. Metabolism is a type of theory, is a type of word that we use for the sake of blood test. हम जो यूज करते हैं नॉर्मली टेस्टिंग में, टेस्टिंग लैब्स में हम यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म. इट इज मैग्नेटिक, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू. शी हैज मैग्नेटिक आईज, है ना. उसकी आंखें ऐसी हैं जो कि खींच लेती हैं. सो नाउ इसको क्या कहते हैं उर्दू में? इसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिसी. समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू, जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिसी. सो इट इज मैग्नेटिक. मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी इज नोन एज तरीका-ए-कार. Methodology is known as the way of handling something. The methodology for PTE to take good band is that आप हर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें. The methodology to take good band is अगर आपका स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका लिसनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाए. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका लिसनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अगर आपका राइटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. मेरी बात समझ में आ रही है? सो देयर आर टू ब्रदर्स. The correct methodology is अपना स्पीकिंग उठाओ और अपना रीडिंग उठाओ, बाकी दोनों खुद ही उठ जाएंगे. I mean to say that the तरीका-ए-कार that you adopt to take good bands is known as methodology. Okay, so तरीका-ए-कार. It is mud. mud कहते हैं मट्टी को. guard, मट्टी रोकने वाला. कोई भी चीज जो मट्टी को रोकेगी, that is known as mud guard. mud is मट्टी, guard is रोकना, mud guard. It is microbe. It is known as a sort of insect, जसूमा और जरासीम को कहते हैं. It is microbe, छोटा बिल्कुल, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है. मेसन कहते हैं. सर मड और सॉइल में क्या डिफरेंस है? मैं कंप्लीट कर लूं जी, मैं आंसर करता हूँ आपको.
ठीक है So now it is mason कहते हैं मिस्त्री को. Mason is known as मिस्त्री. अब मिस्त्री के काम को क्या कहेंगे? Masonry. Okay, so the word is masonry. Masonry means चुनाई लिखा हुआ सामने. Basically it is चुनाई, वो जो सीमेंट से नहीं करते आप ईंटों के दरमियान, उसकी चुनाई कहते हैं. So mason is मिस्त्री and masonry the work that is done by a mason, that is known as masonry. Okay, so now it is majestic. It is majestic. Majestic is something superstitious, beyond the thoughts. कोई भी चीज जो सोच समझ से बाहर हो, that is known as majestic. शानदार. Okay, so now look at this. It is mysterious. Mysterious is पुरस्कार. When you will go to your reading section and you will be going with the first question, believe me, these both word majestic and the mysterious, ये पहले दो questions के answers होंगे. Are you following? And that is what PTE says to go for this vocabulary. एक बात याद रखिएगा, पीटी में स्कोर लेना 3 चीजें जरूरी. 3 चीजें हाथ के नीचे रख लो, स्कोर आपके दूसरे हाथ के नीचे होगा. एक फ्लुएंसी, दूसरा वोकैबुलरी. एक फ्लुएंसी, दूसरा वोकैबुलरी. ये दो चीजें are one of the most important things that some can have. फ्लुएंसी किधर काम आएगी? स्पीकिंग. वोकैबुलरी फ्लुएंसी कहाँ काम आएगी? स्पीकिंग. वोकैबुलरी हर उस जगह काम आएगी जहां पे आपने कुछ लिखना. एक बात याद रखो, तो to take good brands in PTE, if we have to create 3 pillars, out of these 3 pillars, 2 pillars are number 1 vocabulary and number 2 is your fluency. मेरी बात याद रखो. Clear? And third one, if you want to create all 3 pillars, third one is the grammar. मेरी बात समझ आ रही है? So grammar, so make the sentences and the use of spelling. These are the 3 basic pillars of the PTE exam. इस vocabulary को करने के 2 मुझे फायदे. Number 1, I create the grammar content as well because spelling ठीक होते हैं. Number 2, I create the vocabulary content as well. तो मेरे 2 pillars जो है ना वो support होते हैं इस vocabulary को करने से. So now आगे चलिएगा जी. So mysterious, something that is पुरस्कार, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, है ना? पुरस्कार something जिसके बारे में शुकूक व शुबहात होते हैं. That is known as mysterious. This stone is a mysterious stone. ऐसा stone नहीं होता. ऐसा stone नहीं होता. This stone is a mysterious stone. Okay? Mechanics. Mechanics कहते हैं basic science. Mechanics, basic science तो कहते हैं. Mechanics उन लोगों को भी कहते हैं जो चीजों को ठीक करते हैं. So mechanics are basically known as the means and the ways जो हमारी help करते हैं किसी चीज को ठीक करने. उनको हम क्या नाम देते हैं? मैकेनिक्स. ओके, सो नाउ आगे चलिएगा जी. सो नाउ मल्टी ग्रेड, मल्टी बहुत से, ग्रेड्स होते हैं. सो मल्टी ग्रेड ऐसी चीज जो मुख्तलिफ जगहों पर एक वक्त में फंक्शन कर सके, दैट इज नोन एज मल्टी ग्रेड्स. माउंटेन पहाड़ को कहते हैं, एंड माउंटेनियस कहते हैं पहाड़ी रेंज को. माउंटेन रेंज इज नोन एज माउंटेनियस. नंबर 1. नंबर 2, वो जगह जहां पे खासी ज्यादा पहाड़ हो, जहां पे लैंडस्केप कम हो, जहां पे टाउनस्केप कम हो, मैदान कम हो, टाउनस्केप कहते हैं. टाउनस्केप कम हो बल्कि लैंडस्केप ज्यादा हो, उतराई चढ़ाई ज्यादा हो, हम कहते हैं दैट एरिया इज अ माउंटेनियस एरिया. तो 2 जगहों पे रेंज यूज होता है. माउंटेन रेंजेस के लिए भी, पर ऐसी जगह जहां पे हाइट ज्यादा हो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं माउंटेनियस. आगे चले. इट इज मोमेंट्री. मूवमेंट से है. मोमेंट्री वो चीज जो, एक तो ये मूव नहीं है. अगर वो होता मूव चलती हुई चीज तो वो होता MOV से. दैट इज मूव एंड मोमेंट्री. ये मोमेंट्री है, वो मूव से है, जिस वर्ड से आप कंफ्यूज करते हैं. इट इज मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट. लम्हे को कहते हैं मोमेंट्री, वो चीज जो लम्हाती हो, कुछ देर के लिए आए और चली जाए. इट इज बट नोन एज मोमेंट्री. ओके, इट इज मिलिटेंसी, मिलिटेंट से है. मिलिटरी आर्मी, मिलिटेंट्स आर्मी वाले, एंड मिलिटेंसी अस्करियत पसंदी. मिलिटेंसी इसको लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, हमेशा याद रखें. मिलिटेंट्स कहते हैं उन लोगों को जो नाजायज तौर पर असला इस्तेमाल करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं. एंड मिलिटेंसी इज दहशतगर्दी. Militant and militancy. Okay, so militancy is the activity. Militant is the person who does that activity. So now modification, किसी चीज का बदलाव modification कहलाता है. Mandatory, कोई भी चीज जो लाजिम हो. It is mandatory for the students
was mandatory for the youth nowadays to carry their license along with them. अपने साथ अपने लाइसेंस को कैरी करना आजकल मैंडेटरी जरूरी है. माइग्रेशन हिजरत को कहते हैं. It is medieval. Medieval something that is between 18th century to 15th century. मैंने यहाँ पे डाल दिया करून वुस्ता लिखा होता है डिक्शनरी के अंदर. Anything that is a यादगार, a memory of something between 18th century and 15th century. 15 चल रही है तभी जो rather 21st चल रही है. तो 18 से 15वीं सदी के दरमियान में जो वकूफ पजीर होती हैं चीजें, उनके लिए नाम हम एक वर्ड यूज करते हैं. इट इज medieval. प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इट इज medieval. ओके, इट इज medieval. सो नाउ मैग्नीट्यूड, शिद्दत को कहते हैं. ज़लज़ले की शिद्दत कितनी है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 5.5. क्लियर? सो मैग्नीट्यूड कहते हैं शिद्दत को. सो मूव अहेड. सो नाउ इट इज मैनुअल. कोई भी चीज जो हाथ से की जाए उसको हम कहते हैं मैनुअल, और जो कंप्यूटर से की जाए दैट इज नोन एज ऑटोमेटेड. आगे चले जी. इट इज मिड एयर. Mid air, the air that comes from the center, it is known as the mid air. दरमियानी हवा. It is not that दरमियानी स्पीड वाली हवा that passes from building से दरमियान में हमने अक्सर जगह देखी होगी खाली जगह छोटी होती है. That acts as the lung of the building. उसके अंदर से हवा गुजरती है. That air is known as a mid air. Methane is a sort of medicine or it is a chemical. Methane rather अच्छा word ये होगा. So now it is milligram, a small part of a gram. ये वेट का एक स्पेसिफिक पैमाना है. इट इज नन मीन्स द राइबा फीमेल, एंड बेसिकली दीज फीमेल्स बिलोंग टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी हु डिवोट देमसेल्फ फॉर द पब्लिक सर्विस. उनको हम नन कहते हैं. नेविगेट से है नेविगेशन, किसी तरफ का सिमत का तयन करना इज नोन एज नेविगेशन आर्ट और द नेविगेशन एक्टिविटी. इट इज द न्यूक्लियस. It is, the word is nucleus, something that relate to the nuclear activity. It is Nestle. It is not Nestle. It is Nestle. Nestle is the name of the company. And then it is the novelty. Novelty, something very unique is known as novel. The person has got a novel idea of bringing the product with a great advertisement campaign. बड़ा खास idea आया उसको के marketing कैंपेन के साथ इस चीज को लेके आते, तो नयापन उर्दू में कहेंगे इसको. समथिंग दैट इज वेरी यूनिक, पहले किसी ने नहीं किया है. नॉर्मली वी से नोवेलिटी और नोवेल आइडिया. नोटिसेबल, जो काबिल तवज्जो हो उसको हम कहते हैं नोटिसेबल. इट इज आगे चले. इट इज निम्बस. निम्बस इज दैट क्लाउड जो कि बारिश देता. निम्बस इज दैट क्लाउड जो कि बादल देता है. दैट इज स्पेसिफिक टर्म यूज होती है उसके लिए. दैट इज नोन एज निम्बस. Nimbus, डिक्शनरी कहती है nimbus. It is not the word nimbus is the meaning. Meaning is nimbus, that specific cloud जो कि बारिश ला, उसको हम nimbus कहते हैं. So now it is navicular. It is navicular. Navicular is a disease of the bones in human, maybe in animals maybe, but more commonly navicular is a disease that is of the bones, but it is found in the horses. ये घोड़ों में ज्यादा पाई जाती है. So now it is attendance हाजिरी, non-attendance गैर हाजिरी. Nickname, name is the नाम, nickname जो आर्जी नेम होता है. It is narrative. Narrative कहते हैं उनका ख्याल. Narrative. Mr. A's narrative is different than Mr. B. जो Mr. A कह रहा है वो Mr. B से different है. So narrative वजाहत को कहते हैं. Narrative बयान को कहते हैं. बयानिया is known as the narrative. Nutrition ग़ज़ाइयत. It is opium, अफ्यून का नाम है जी. It is opium. Opium अफ्यून को कहते हैं. Outbound, वो चीजें जिनकी झुकाव बाहर की तरफ. Organization has 4 outbound activities. 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बाहर की तरफ जाती हैं. For an example, sales is an outbound activity. Marketing is an outbound activity. Distribution is an outbound activity. Ocean, समंदर, and ornament is known as zever. उर्दू में कहेंगे जी इसको जेवर. So now we are